But what I feel that the method of communication, what we could do in Himachal, I think somewhere we could not touch as far as Gujarat is there. Our cadre was strong in Gujarat. Our candidates really fought good elections. But at the end of the day, I think the communication part or the credibility part was somewhere missing. And this is what I could analyze as of now. But in Himachal, you also had Priyanka Gandhi Vadra, who was there on ground interacting and holding rallies. In Gujarat, none of your top leaders were present. You are right. Absolutely. I think that is also one of the factors that where Priyanka ji really campaigned very strongly on ground and she was involved in all decisions. I think it now at the end of the day, even if we were denying, but I think it has played important role. I think our head leaders should have been more. Mallikarjun Kharge was there for like 5-6 days, I think. But if more people from our central leadership had been there in Gujarat, I think we would have made difference. But see, I think it's a big defeat. At the end of the day, we need to analyze that. Rohanji, simple point that last time along with the Patidar agitation, Hardik Patel, you had Jignesh Mewani, Alpesh Thakur, you had Ashok Gehlot and Rahul Gandhi also traversing the length and breadth of Gujarat and organizing, doing a lot of rallies and openly mounting a challenge. There was a lot of shore that took you to 77. 77 to 92, can you do it silently? Or should you have made more noise? It's a simple question. It's not, it's a no-brainer for anybody. But let's quickly go back to Arun Dhanta. Arun, you are on ground, celebrations at the BJP headquarters, women, men, everybody doing the dance and with the dhols and the nagaras. What's happening? मिठाई में क्या बट रहा है? Can you hear me, Arun? Well, I think we've just lost Arun Dhanta there, and we'll also try and connect with Siddhant Mishra. Plenty of celebrations. It's a moment to celebrate. Ladies and gentlemen, there may be local factors involved in what happened in Himachal, but if the opposition wanted to crowd Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister Narendra Modi-led BJP, the state where they had to mount a challenge was Gujarat. And somewhere perhaps the BJP realized that the state where they need to hold on to the narrative or set the narrative, set the tone is Gujarat. And look at the kind of effort that's been put, and that's what's given them rich dividends. And somewhere it's manifest. Is there any one pocket where you would perhaps fault the BJP of not doing well this time around? Not at all. Look at all the regions. I'm going to go region-wise. Let's start with Saurashtra, which is where the BJP lost big time last time around. Look at the sweep. Out of 54 seats, BJP 45, a gain of 22 seats. Congress just 5 seats, down 25. Yes, the AAP would have hurt the Congress in some pockets. There are 3 seats in Saurashtra where the AAP is currently leading, including in Khambhalia, which is the Isudan Gadvi seat. But 45 out of 54 to the BJP in Saurashtra. Go back and check in on 2017. It was 30 to the Congress, only 23 to the BJP. That's a huge change, a sea change in Saurashtra. Yes, 1, because of the Patidar factor, and 2, yes, AAP has hurt the Congress in rural parts of Saurashtra. Let me also look at some of the other regions. Let's look at the North region. That was the other part, Mehsana, Patan, Sabarkantha, Banaskantha, where the Congress did relatively well last time around. This time, out of 32 seats, BJP 25, up 11. Congress down 11. In 2017, go back and check in on how that played out in 2017. It was again Congress in the lead, 17 to Congress and 14 to BJP. Even though the vote share was lower for the Congress party, this time around, the Congress has gotten decimated in both Saurashtra and in North Gujarat, the 2 parts of the state, the 2 regions of the state where it did reasonably well last time around. So clearly, if you look at the length and breadth of Gujarat, from Saurashtra to South Gujarat to Central Gujarat, North Gujarat, there's not a single pocket where the opposition has any kind of bragging rights. It's the BJP all the way through, across the length and breadth of Gujarat. And like I said, you know, a 159, it could end up at 160. A 160 election, which has never happened in the history of Gujarat, for an incumbent party to come back after 27 years and record a historic mandate. I think this is as much a watershed election, if not more, than the 1985 Madhav Singh Solanki election that we keep talking about. Well, there are certain jokes doing the rounds. One is that is BJP getting the kind of majority that AAP was claiming at the MCD polls but did not get, and the BJP is getting those numbers. But that aside, it's celebration for the BJP. It's the larger story, ladies and gentlemen. If you deliver on welfare, if you give Labharthis, if their due,
if you empower or if you financially enable women, they will come back and remember outside of the kind of narratives that are set. Let's go across to Arun Danta. I'm going to first check. Arun, can you hear me? Yes. Take us through what's happening behind you. Well, Anand, the scenes are crazy here. These Karyakartas of Bharatiya Janata Party who come here from different parts of Gujarat are electrifying. And we'll go to that side. I'll show you color and the dance which they are performing. Look at the Garba scenes here. Garba scenes are going on. We'll try to speak to these women as well who are Garba and find out and see how traditional way for them to celebrate the entire victory of Bharatiya Janata Party. This is the entrance of the Kamalam where these Karyakartas of Bharatiya Janata Party standing there on the stairs and these women you can see performing. बताइए कौन सा डांस है ये? बताइए कैसा कितने खुश हैं कितने आप बताइए क्या कहना चाहेंगे बताइए मैडम कितनी सीटें आ रही हैं आपकी These are the scenes here at the Kamalam of Anand which you are seeing at this moment. We'll go to that side and Yes, the dance is happening. Celebration. It is Navratri which is out again. The ladies performing Garba which is very traditional, and moment you hear these beats, that's what आपके पैर थिरकने लगते हैं. But this is celebration for the hard work that they have put on ground. It's the work of an entire electoral machinery that's been championed, fronted by Prime Minister Narendra Modi. But it's the Karyakartas on ground who have worked tirelessly and hard. And it's an unstoppable process. It's a never-ending process. It's perennial, ladies and gentlemen, because we as a nation are always in election mode. And now, soon after this, what's going to happen as I pull back into the studio, ladies and gentlemen, is that Gujarat is going to get ready for Lok Sabha 2024. So these Panna Pramukhs, these Karyakartas will be asked to work again and harder this time. But let's also put some work and let's put some hard yards as we do the race. It's Prime Minister Narendra Modi led BJP racing far beyond that 92 number to a record 159. 159, ladies and gentlemen. Who would have thought they would do this? Not when they're challenging or for the first time they're asking for the mandate. This is for the 8th time that the BJP will be in power. 7 successive consecutive wins that they are registering. And this is a record after 2.5 decades in power if they're returning this number 159. I hope Shivraj Singh Chauhan is watching, because that's the pressure that will be put on him in Madhya Pradesh for him to do what he has to do come November 2023. But this is the story of Gujarat at this point. But let's quickly, as we roll out and we see that the BJP is far ahead in Gujarat and everybody else is far, far beyond. They don't even qualify collectively to form the opposition there in Gujarat. Let's try and roll and see what's happening in Himachal. Yahan picture filhal. It's looking like that the Congress party is the hero with 39, near about 40, very, very comfortably clear, about 5 seats clear of the halfway mark. But ye picture abhi baki hai, because there are a few rounds left. The margins are not so great. The BJP would be hoping to play catch-up if they want to retain power. Anything in the vicinity of 34, 35 seats for the Congress spells trouble. But right now, they seem to be comfortable. Something that they have done here has worked.
something that the BJP has not done, has not worked for them. Factionalism, 21 rebels, all those stories will come into play as we will talk about Himachal. But right now for Mallikarjun Kharge, at least there is one win in the bag soon as he has taken over as president of the Congress party. BJP is at 160. BJP is at 160 in Gujarat. It's unbelievable. It is mind-boggling. We keep, no one's crossed 150, but 160 seats, ladies and gentlemen. Between AAP, Congress and others, independents, there's only 22 seats. The remaining 160 are in the BJP's pocket. I mean, this is a historic election. This is, like I said, this is comparable to 1985. This is bigger than 1985. Solanki's election, he got 149. This is, what, another 11 seats more. 1985 was Indira Gandhi's demise after her assassination. There was a lot of sympathy. There was a lot of, there were other factors that came in. Correct. Here, there should have been a drain. There should have been anti-incumbency or tiredness. It didn't happen. I'm saying that election was also about return of the Congress after a gap. Yeah. Here, a party has been in power for 2.5 decades and is returning with a bigger band. In fact, there is a soundbite that is coming in. Yes, Dr. Shashi Tharoor is speaking to Pallavi. One area where you people were there round the clock last time, and Rahul Gandhi was there. This time, a performance has been very good. And the second, of course, is you allowed AAP also to come in. What went wrong? It's a very good question. Since I was neither on the official campaigner's list nor... Since you have been there? That's a different matter for the party to respond to. But I think I really will leave this to the official spokespeople of the party to come back to you on it. I'm sure they've thought about all of this. There must be some real concerns that this kind of performance obviously points Rahul to, Gandhi especially given the good performance in Himachal. Do you think in hindsight, maybe Rahul Gandhi going to Gujarat for his yatra could have helped? Look, I really don't want to get into that. Let's leave it to the party to pronounce itself. But also, the fact is that in Himachal, you had a more organized campaign. In Gujarat, there were personal attacks on the Prime Minister. The campaign on the ground looked disinterested. Do you think that's a rethink your party needs to make? That's your assessment that they look disinterested. I think those who are campaigning will tell you they did their best. But again, people who were on the ground, on the spot, did the work. They're going to be in a better position. What about the entry of AAP? Is AAP a concern which the Congress party needs to address? I think AAP very clearly is attempting to supplant the Congress in many ways. They've succeeded in some ways in Gujarat. They have made detailed inroads in Gujarat. And now my understanding is they're contemplating similar ventures in other states. And I think at some point one needs to talk and see, are we both in the opposition space together in order to try and overcome the challenge? Well, that's the conversation Pallavi was having with Dr. Shashi Tharoor. Lots to introspect for the Congress party as far as Gujarat is concerned. Will they try and say blind spot Gujarat because they think they are in position to form government in Himachal? That would be perhaps a mistake for the Congress party. Likewise for the BJP to overlook what's happened in Himachal just because they're celebrating Gujarat. But Gujarat is a phenomenal story. Phenomenal. After BJP's historic win in Gujarat, there is an update that's just come through at this point that Prime Minister Narendra Modi has congratulated Team Gujarat, and of course the person at the helm was C.R. Patil, and he was the one who's been involved in this along with Amit Shah, who's been camped in Gujarat for a while. But C.R. Patil was very strongly, very closely involved in the ticket distribution. So the BJP saw them as a unit, and Amit Shah has also called and congratulated them. But interestingly, both Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah were equally responsible. They should take credit to themselves as well for this victory. Because Aka, I was in Gujarat and in Ahmedabad office. Mr. Shah was there till 2 a.m. 2:33 a.m. he was strategizing with the party leaders. So that the manner in which he was hands-on through the day, he would be campaigning. In the evening, would return to the party headquarters roughly around 7 to 8 p.m. and then would be there involved in the strategy. So that hands-on approach, then we see all hands on deck. No, and what he said to Rahul Joshi was absolutely right. Yes. हमारे सारे record तोड़ के हम वापस आएंगे. And this is and this is not even apne. This is the state ka record. Even the state record has been broken at 160. Like I said, we have very, very convenient terms, anti-incumbency, vote has been split between the opposition. This is far beyond all of that, ladies and gentlemen. There is something working in Gujarat. This is a huge affirmation for Mr. Modi, the Gujarat model of development. And most importantly, it is telling the BJP, it's telling the central leadership,
Modi, tum aage badho, hum tumhare saath hai. I think that is what. That's the only word. There has been a concentrated effort for the last from the time the cabinet changes happened. Yeah. See, C.R. Patil, PMO was involved 18 months ago. PMO was involved. Not that anything was taken away from Amit Shah, but there was another element that came in with C.R. Patil. There is the Prime Minister and the PMO's direct involvement. On ground, all the Labharthis ensured all schemes are delivered, work is being done, the ministers kind were of present. hands-on approach, the all hands on deck, सारे जुड़े हुए थे, वो दिख रहा था. Various ministers in charge of various constituencies, various chief ministers on ground campaigning. Himanta Biswa Sarma reaching out to the Assamese voters. You had Devendra Fadnavis reaching out to those who were there in that border area of Maharashtra. So, you know, that is the approach. Each person assigned a role, but more importantly, not taking their home bastion lightly, not taking anything for granted, and somewhere realizing that Gujarat will set the tone, narrative, etc. for Lok Sabha 2024 and the critical next 12 to 15 months, ladies and gentlemen, where nearly 10 to 13 states and union territories of our country are going to go to the ballot. Let's listen to what Mallikarjun Kharge has to say, Congress President. नहीं, मैं बोला ना, उसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे. पूरे हिमाचल में आपका क्या है आकलन सर? हिमाचल में आप लोगों को मैं कहा ना ये कि सभी रिजल्ट आने के बाद शाम में हमारे पार्टी का जो कुछ कहना है वो कहेंगे. एक सेकंड सर, एक बाइट देके चलिए खड़गे जी. Action under a non-Gandhi leader in Mr. Kharge himself saying that रात में analyze करेंगे. Perhaps the Congress would be okay. Vikramaditya, the son of के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी. वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी. ये मैं कह सकता हूं. नेतृत्व कौन करेगा? किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आपकी क्या चाह है? देखिए, मेरी चाह और ना चाह से ये फर्क नहीं पड़ता है. चाह जो है वो विधायक दल की होगी, हाईकमांड की होगी, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है. ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है. उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस. उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से, और हाईकमांड का भी उसमें पूरा सहयोग था. प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल के अंदर हुई है. सब चीजों का मिलकर आप चाहेंगे कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अगुवाई की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर. जो विधायक दल चाहेगा, हाईकमान चाहेगी, हम उस चीज की पैरवी करेंगे. वो रेस में है? हाँ, बिल्कुल. शी इज वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द नेक्स्ट. क्या विधायकों को बाहर ले जाया जाएगा, प्रदेश के बाहर ले जाया जाएगा खरीद फरोख्त से बचाने के लिए? हम हर वो चीज करेंगे जिसके लिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है. हमने छत्तीसगढ़, हमने महाराष्ट्र में देखा है, मेघालय में देखा है, गोवा में देखा है. वो चीज हिमाचल के अंदर रिपीट नहीं होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं. भाजपा के लोग बात हुई सर, सोनिया जी ने फोन किया सर मेजोरिटी आने के बाद. अभी बात हुई प्रतिभा जी के ऊपर? अभी करेंगे बात. अभी थोड़ा सा मेजोरिटी क्लियर है, उसके बाद करेंगे. So the Singhs are claiming victory. That is Vikramaditya Singh, Pratibha Singh. There are celebrations outside her residence. Akash is joining us. So Vikramaditya Singh saying that the legislative party or the legislators will decide and the central leadership will decide. But he has confirmed that his mother is in the race to become Chief Minister of Himachal Pradesh. Is the Congress claiming victory in Himachal already, or are they still waiting? Hello. Yes, Akash. So Anand, I'm showing you the visuals of Laddu. I'll ask my camera person to show you that visual. There you see supporters are basically happy with the current trend, and now they're confident that Congress is going to win finally. Just a few minutes back, we saw that how Vikramaditya was claiming that OPS was one of the main issues of Congress party. पूरा करेंगे, ये भी हम कह सकते हैं. हिमाचल के लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है. और जैसे ही पूरी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद हम और धन्यवाद हिमाचल प्रदेश की जनता का करेंगे. पहली कैबिनेट में कौन से मसले जो है वो कांग्रेस सुलझाएगी? जो हमारे 10 गारंटीज है उनको हम पूरा करेंगे. विक्रमादित्य बातचीत कर रहे थे कि जो 10 गारंटियां हैं उनको पूरा किया जाएगा, और कहीं ना कहीं Aditya Singh, they're saying that they will be keeping with the promise that has been made, particularly of the OPS. But the Congress went for that gamble. They understood that legacy and that nostalgia that is there with Veerbhadra Singh could make the people of Himachal
gravitate towards the Congress. His image was there in all posters. Akash is joining us live. So is the Congress more or less settled that they have the power in the state, or will they be still cautious because there are several rounds still left? So, Maria, I could not hear the question, but as of now, Congress is fully confident because they people are saying, in fact, Vikramaditya is saying that, all the observers are now coming to Himachal Pradesh and, in fact, they are forming the government here. Also, a question was asked, "Aapko dar nahi hai khareed farokht ka?" So, he replied that no, because our central observers are coming, and as far as the majority is concerned, so they are somewhere moving towards the magic number. 35 is the magic number that is required as of now, and Congress is leading on 37 seats as of now. Also, OPS was the main issue as far as issues related to Himachal Pradesh are concerned, and Vikramaditya is somewhere maintaining that in the very first cabinet they'll be deciding on the OPS issue as well. So again, if I can show you the visuals, laddus are here and all the supporters, you can see just a few minutes back we heard the narebazi, Congress Jindabad and all other things, and this is going to be a victory. This is what Congress supporters are saying. In fact, leaders are maintaining that this is going to be a big victory for them. Also, the important question was, who will be the CM? To which Vikramaditya has replied, and in fact has maintained that his mother Pratibha Singh is a very part of those candidates whose name. Yeah, Pratibha Singh is a contender. Akash, I'm just going to check. Bhupesh Baghel is addressing a press conference. Let's go across to that. योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा दान के लिए भी मैंने अपील की है। तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाए हैं। तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूंगा और मीडिया के भी साथियों से कहना चाहूँगा, पैरा दान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध होगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातें जिसको आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई समस्या जिसका निदान के सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है। बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत रहती है। Talking about Chhattisgarh at the moment, no confirmation whether or not he is already en route or he is going to make his way to Himachal. At this point, there were talks that he may be sent there or he may air dash, but Congress looking comfortably placed at the moment to form government in Himachal. The family of Veerbhadra Singh, Pratibha Singh, and of course Veerbhadra Singh and Pratibha Singh's son Vikramaditya Singh, one of the youngest candidates this time around in the elections, has already come out and said that they are looking confident to form government. Quickly, just checking with Zaka Jacob on the wall, if we were to look at, I know we are focusing on Gujarat, but quickly on Himachal, if we can look at, where do you think the BJP has lost maximum ground? They've lost their minus 17 from the last time around. Absolutely. Which region has hurt them most? Definitely Shimla. Definitely Shimla, because I think there almost all the seats. Let me just bring out Shimla. The populated belts of Himachal, Hamirpur, Bilaspur, Shimla again, it's 6-2. I mean, in the capital of the state, if you're trailing 1:4 in that ratio, 6-2, I think that's a problem for the BJP. So in Shimla, definitely the Congress has done well. I just want to bring in Hamirpur and Bilaspur as well. Again, these are the populous parts of the state. Let's bring those districts again, Hamirpur and Bilaspur. Let's see how the BJP is doing there. All right, this is not working. The numbers are there. It's 4-4. It's evenly split, one to the other. So one of the independents, Ashish Sharma, is a Congress independent, but it's 4-4. But really, I think it's the Shimla story, the whole belt here, the Shimla belt, the Solan belt, Una belt. That's where the Congress is doing well, the BJP doing well in the Mandi, Kangra belt in the central part of the state. And of course, the outer constituencies as well, whether you go to Lahore, Spiti, Kinnaur, all of these outer constituencies, very sparsely populated, 30,000 people, 50,000 people. Again, there the Congress doing well. But I think the bulk of the Congress's gains have happened here in this Shimla belt as well as in this Hamirpur, Bilaspur belt. And I think that's where they've done growers. well. Their discontent is a matter of concern. Perhaps did the BJP underestimate their discontent, and the Congress kept on promising the benefits for apple growers as well. Shama Mohammed of the Congress party is joining us. Shama, of course, this is a number which is looking very promising for the Congress party. And if these numbers hold, then Congress could very well form the government. So it is the Rivaj which is continuing in the state.
Yeah, so it is not if the numbers hold. I am sure the numbers will hold because there's no need for the numbers now, and I'm seeing the time also. So I think we've said before also we will form the government in Himachal. There's been a lot of issues, including the old pension scheme, the price of fertilizers, cartons for the apple farmers, unemployment, price rise, and also the Agniveer. A lot of Himachal people are Jawans. So that has also not gone down very well with the Himachalis. And the other thing is they try to bring in UCC, the Hindutva laboratory here. And they have to understand that that doesn't work in Himachal Pradesh like it works in Gujarat. The Gujarat, of course, you can play the communal divide, but this thing does not Shama Mohammed, interrupting you. We've got an update coming in from Gujarat. We'll come back to you, ma'am, in just a bit. Harsh Sanghvi has won. He's won from the seat of Majura. That's the big key race alert that's just coming through. Harsh Sanghvi has won comfortably from Gujarat, in Gujarat, from the Surat district in Majura. That's the area. Raghavji Patel is also winning from Jamnagar Rural. We'll try and go across to Griha at the Live Results Hub for a quick update on both Gujarat and Himachal in just a bit. But convincing wins, and it was a no-brainer as far as Harsh Sanghvi. Let's come back to Surat, Gujarat now. All 9 seats. You were asking about Surat. All 9 seats the BJP is leading in, including in Varacha, where Alpesh Kataria of the Aam Aadmi Party is trailing. In Katargam, Gopal Italia of the Aam Aadmi Party is trailing. So all 9 seats in Surat district being won by the BJP, or the BJP is in lead, including in Majura, where the Home Minister of the state, Harsh Sanghvi, is leading. If you look at all the cities, in Jamnagar, both the seats, Jamnagar North, Rivaba Jadeja, Jamnagar South, the BJP candidate, in all 4 Rajkot seats, including Rajkot West, from where Vijayabhai Rupani used to fight, there again the BJP is leading. Surat, all 9 seats, BJP leading. Vadodara, all 5 seats, BJP leading. Even in Ahmedabad, out of the 16 seats, Congress last time had 4, BJP had 12. This time BJP has 14 and the Congress has only 2. I think 2 strands stand out for me. One, it'll be interesting to see, particularly in the minority-dominated seats in walled city again. The Congress had 4 last time, right now only 2. Also the tribal-dominated seats, both in South Gujarat as well as in North Gujarat, where the Congress did relatively well last time around. The Aam Aadmi Party has eaten into it. In one seat, the AAP is leading. In the other seats, the BJP is leading. So both in tribal-dominated seats as well as in the minority-dominated seats, there seems to be a new claimant to the Congress vote. And that is what the Congress is being hurt by. And of course, Saurashtra. We've been talking about Saurashtra. Right. Maximum number of seats, 58 seats. Out of the 5 seats, AAP is leading in, 4 are in Saurashtra. So it is definitely hurting the Congress party in rural pockets of Saurashtra. I think that is something that they need to really... So the BJP's overall tally going up significantly. So the BJP's growth is coming at the cost of other parties, but also the Congress has been decimated. The Aam Aadmi Party is trying to occupy that space of opposition, but Congress is in double digit. Aam Aadmi Party is in single digit. Not just that. See, 99 last time around, 57 seats the BJP is pinched from the Congress. So has the BJP retained its 99 while taking 57 out of the 58 away from the Congress party. So purely pinching it away, taking it away from the Congress straight up. You know, we talked about the Patidar seats, even the OBC dominated seats, and they are much larger. 75 out of 182 are OBC dominated seats. Wow. Look at this. 64 to just 9. The Congress reduced to single digits in OBC dominated seats. You go back and check in 2017, that figure was 34. If a party comes down from 34 seats just to 9 seats and BJP has got 39, almost 40 of that, then I think there is a problem. There's a problem for the Congress party. The OBC vote has shrunk for them, the tribal vote has shrunk for them, and of course the minority vote has shrunk for them. So significant sections of vote bank, as it were, have shrunk for the Congress party. And they seem to have done it with Griha, because the update that is coming from Jairam Thakur's office to me is that the BJP is leading in 6 seats after the 27 leads that we are showing. Over and above. So over and above these that means they should get to about 33. So that's what they are hoping, and then others at 3. So let's try and connect with Griha to get more details. Griha, are you there? Can you take us through what's happening in Himachal and Gujarat? Yes, absolutely. Let's take a look at the main tally, Anand, Maria. The fact that we are looking at about 15
that have been right now declared, and out of them, 8 to the BJP, 6 so far to the Congress, and 1 independent. That's the word from Himachal. If we look at the winning list in Himachal, so winning list ek baar dikhaiye. So we are looking at the main candidates here. Jairam Thakur, we had already declared the first winner. Then it came from Sundarnagar Mandi, another BJP victory. Anil Sharma from Mandi was another BJP victory. Deep Raj, Dilip Thakur, again BJP. After that, we've got Congress candidates who have been declared as winners. Jagat Singh Nergi from Kinnaur has won. Rohit Thakur from Jubbal Kotai. Hamirpur again, Congress has won. Ashish Sharma. Kullu also went to the Congress party. Shimla, Harish went to the Congress party. So all of that, this is the tally. Quickly, one look at Gujarat there, Anand. If we look at Gujarat, look at the main tally in Gujarat. Main tally, sir. There are so many results that have been declared. Out of, kitna result declared where, sir? Total 18. 18 so far have been declared. 16 of those going to the BJP, 1 to the Congress. Right, and but in Gujarat we are given to understand most of the seats there are no tight fights or really hot contest. It's winning by a distance. It's comfortable. In Himachal, if the news as Maria is sharing from Jairam Thakur's office is that 27 plus another 6 seats where currently the BJP is leading in the latest round of counting. Is there a story within the story there? Is there drama there? We'll keep close tabs. But ladies and gentlemen, nearly 4.5 hours of continuous coverage here on CNN News 18 on Result Day Live with a historic mandate being handed over to the BJP by Gujarat. We are going to take a very short break. I'm being told it's 5.5 hours. We've lost track of time. It's been so engaging. I've been stuck to our screens. Hope you have been too. Stay with us.
going to get underway. On the day that counts, CNN News 18 was way ahead of competition. The first leads coming in right at the bottom of the screen for the BJP from Gujarat. The best election team delivered yet again. Story in Gujarat right now as the BJP crosses the halfway mark. First time the BJP is at its best ever in Gujarat. A party which has been in power for 27 years, uninterrupted, getting that number. The Congress has crossed the halfway mark and now has got the position of strength to form government in Himachal Pradesh. Elections equals CNN News 18. कवरेज अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है. Thank you for staying with us here. Elections equals CNN News 18. It's been fantastic, ladies and gentlemen. Himachal story is changing, dynamic. By the time we went into the break and we came back, Congress is down 2 seats, BJP is up 2 seats. But this story is only increasing and getting better and better for the BJP. This is the strike rate of the BJP. Look at that, 156 seats where they have leads or confirmed wins on. Even as the Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel is reaching the Gujarat BJP headquarters. Let's quickly go across. C.R. Patil is also standing right next to him. Plenty of celebrations. We'll see. Yes, Bhupendra Patel, C.R. Patil. Yeah, mithai bhi khilaya ja raha hai. Let's go across to Siddhant and Arun. Yes, take us through what's happening on ground. We'll try and go across to them. हाँ वो गुजराती मिठाई तो खिलाया जा रहा है, but Bhupendra Patel has also played his cards very well. He has conducted himself very well. He has tried to steer clear of making any comments or which will draw unnecessary controversy. The first 2 or 3 times he tried to speak to the national media, after that steering clear and trying to speak a lot with the local media, interacting with the people on ground, leaving the central leadership to do the batting at the national level or with national media. And he has, and somewhere he is also strength. Last 18 months he's also been able to build a certain base for himself. He's worked with the new leadership. That we look at. Yeah. The team BJP, which says that the local leadership and the central leadership go hand in hand. The Prime Minister came in with that campaign blitzkrieg, interacting with the party leaders, and this was here, the party headquarters, where he sat for hours interacting with the Karyakartas, interacting with the poll strategists. And now I think Bhupendra Patel is leaving his home for the party headquarters, where he will be going. Home Minister Amit Shah has spoken to him, Prime Minister has spoken to him and congratulated him. This is what the new BJP is. It's not about that the central leaders replace and take away the space of the regional players. The regional players are equally important. He is winning, and in fact he has won with a record margin once again. But Bhupendra Patel has been that quintessential silent player. The player. But इसमें एक चीज है कि वो एक दायरा है and you stay, you play within that daira and everybody does their role, does their job, and you continue to remain there and it all works. अपने पिच पे बैटिंग करो, वो बिल्कुल perfectly आपने बोला ज़ाका. And the other thing is with Bhupendra Patel, it was here on the News 18 platform at the Adhiveshan that Amit Shah first openly came out and said कि Bhupendra Patel हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, setting all matters to rest. You know, we tend to forget this, that one of the reasons why Bhupendra Patel was made the chief minister was also the Patidar factor. Yes. Let's be very clear. The Patidar factor, which cost the BJP in 2017, the central leadership recognized that was a problem that needed to be addressed, and they brought in, he was a first-time MLA? I think he was a first-time MLA when he was nominated as chief minister. To bring in a first-time MLA, make him chief minister, I think, and for him to come back with this kind of returns. I do suspect though, and let's see, we'll know in the next couple of days, I do suspect that there will be changes in the cabinet. You will see a lot more younger leaders becoming ministers and perhaps signaling a generational change. Thakur, Hardik Patel win. Whether उन लोग को representation मिलेगा नहीं, लेकिन but Zaka, this is what I'm saying, that this is a party which has redefined its own politics, which has expanded its own vote base and has constantly made an effort in making inroads. Who would have thought that a party which went below 100 in 2017 returns with a mandate which is phenomenally huge and has made inroads into all those pockets that they had lost.
So the message for other political parties is जब रूट मजबूत होगा, जब जड़ मजबूत होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं. And you cannot take any voter vote-based voter for granted. You have to let your delivery talk. You have to take the message across, and you have to make a nice big song and dance about it. Yep. You know, this whole expectation from the voter is कि तुम आओ मेरे पास, मैं वोट तुम्हें दूंगा. Yes. But I want you to come to me. And then you have the likes of Prime Minister, Amit Shah, all the leaders, everybody saying, मैं आ रहा हूँ आपके पास. I'm coming to you because I appreciate what you have done. In fact, Vijay Rupani is joining us, and interestingly, he was the Chief Minister of Gujarat, and that transition that happened from Vijay Rupani to Bhupendra Patel was smooth. Vijay bhai, namaskar. पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा नमस्कार कि आप एक्सपेक्ट करते थे भाजपा को इतना बड़ा, इतनी झोली में भर देगा पूरा गुजरात आपको? देखिए, हम लोग तो एक्सपेक्ट करते ही थे, और प्रधानमंत्री ने भी 2-3 बार आम सभा में भी बताया था कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और हमने रिकॉर्ड तोड़ा है कि गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है. पिछले सालों में कोई पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी. दूसरा रिकॉर्ड कि 7वीं बार हमारी सरकार बन रही है. 32 साल तक लगातार कोई प्रदेश में एक ही पार्टी को निरंतर यानी कि सातत्यपूर्ण स्वरूप से कोई पार्टी सत्ता पर आरूढ़ नहीं रही. ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है. विजय भाई, आप इसका सेहरा किसको पहनाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो भाजपा के पक्ष में उसने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता, गुजरात की जनता को उनके प्रति विश्वास, भरोसा, मोदी जी की जो पिछले 8-9 साल से जो सरकार दिल्ली में चल रही है, उन्होंने जो वादे निभाए, तो मोदी जी के प्रति और विश्वास बढ़ा. और गुजरात में पिछले 2 दशक से विकास निरंतर बढ़ता गया, और आम गुजरात की जनता उसका विकास का अनुभव भी कर रही है. ये सारे कारण है, और कांग्रेस इतनी वीक हो गई है, अब डूबती नैया बन गई है, इसलिए कोई सामने लड़ाई नहीं थी. विजय रूपानी जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ. आपने राजकोट में, सौराष्ट्र में, हाँ जी नमस्कार, बहुत मेहनत की आपने. एक बात बताइए, हम लोग 5-5.5 घंटे से बोल रहे हैं, गला दर्द कर रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ. आपने कैसे मैनेज किया? और सबसे बड़ी बात, सौराष्ट्र में जो पिछली बार आपकी तरफ से वोट चला गया था, अब की बार सबने घूम घूम कर आप ही को वोट दिया है. आपका मतलब यानी भाजपा को वोट दिया है. तो क्या सही किया आपकी बार जो पिछली बार नहीं किया था? देखिए, पिछली बार इलेक्शन बहुत बड़ा बीजेपी के लिए टफ था, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चले, और कांग्रेस ने पूरा जातिवाद इतना भड़काया था. ये सारी बातें पिछले 5 साल में टोटल समाप्त हुई. वातावरण अच्छा और क्लीन हो गया. हमारी सरकार ने भी पूरे जितने बाई इलेक्शन हुए वो हम जीते थे. हम लोग कॉरपोरेशन, पंचायत चुनाव भी अच्छी तरह से 90% सीटें जीते थे. और ये वातावरण आगे बढ़ता गया सौराष्ट्र में. और सौराष्ट्र में जो खास तौर पर पानी की समस्या थी जी, वो भी खत्म हो गई, और अच्छी तरह से लोगों ने इस बार प्रेम से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है. आप क्यों नहीं लड़े चुनाव? हमने बताया था, हम सीनियर लोगों ने सभी ने बताया था कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और गुजरात ही ऐसा प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ है, यहां ही हम कर सकते हैं. हम लोग लड़ते तो चुनाव हम लोग भी लाख वोट से जीतते जी, लेकिन नए लोगों को मौका मिले और एक नई कैडर भी बने, और हमारे गुजरात के लीडर में और लीडर बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा. विजय जी, ये हमने देखा है, ये भाजपा ही में शायद होता है. ये ट्रांजिशन जो हुआ आपसे भूपेंद्र पटेल की तरफ, या आप लोगों ने जो युवा चेहरा है, आपने बोला कि चलिए वो लड़ेंगे, हम पीछे हटेंगे, ये भाजपा में इस तरह का क्या तहजीब है कि ये सब स्मूथली हो जाता है? देखिए, हमारे यहाँ हम पद के लिए काम नहीं करने वाले कार्यकर्ता है.
हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता है। तो पद तो आता है जाता है, पद बदलता रहता है। तो चुनौती और पार्टी का बेस कैसे बढ़े, आइडियोलॉजी कैसे हमारी ज्यादा लोगों में समर्पित हो, उस दृष्टि से हम काम करने वाले कार्यकर्ता है। इसलिए हमारे यहाँ इजीली होता है। विजय रूपानी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र शेखावत जी भी जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, मैं भी चाय की चुस्की ले रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, ये प्रचंड बहुमत जो मिला है, इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए, बहुत सारा जनता को, गुजरात की जनता को बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा धन्यवाद है। गुजरात के नेतृत्व को बधाई है, देश के नेतृत्व को बधाई है कि जिस तरह की चर्चा हमने की थी, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिस तरह माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, जिस तरह से विजय रूपानी जी ने कहा था, CR पाटिल साहब ने कहा था कि हम नया इतिहास बनाएंगे। गुजरात की जनता ने एक बार फिर मोदी जी की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पर मोहर लगाई है, डेवलपमेंटल एजेंडा पे मोहर लगाई है और एक नया इतिहास जो है गुजरात की जनता ने बना। गुजरात में जो हुआ, गजेंद्र जी, गुजरात में जो हुआ वो हिमाचल में क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा? आपको आवाज आ रही है? आनंद, बीच में कुछ और कनेक्ट हो गया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुजरात में जो बहुमत मिला है, जो भारी बहुमत मिला है, वो हिमाचल में क्यों नहीं दिख रहा? हो गया, रामपुर और उत्तर प्रदेश आ गया। अच्छा, we'll try and sort that audio। विजय रूपानी जी, मैं जल्दी से आपसे ही ये सवाल पूछ लेता हूँ, जब तक कि गजेंद्र जी वापस जुड़ जाएं, उनके साथ ऑडियो ठीक हो जाए, कि जो सफलता गुजरात में मिली है वो हिमाचल में क्यों नहीं मिलता दिख रहा? देखिए, हम लोग तो गुजरात के चुनाव में बिजी थे। हिमालय में एक्चुअली क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात सही है कि हिमाचल में जो हुआ उसमें बीजेपी को लॉस हुआ है। ये जो ट्रांजिशन की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझना है कि सबका अपना अपना रोल होता है। स्टेट लीडरशिप का रोल होता है, प्रधानमंत्री का रोल था, होम मिनिस्टर अमित शाह का मतलब होम स्टेट है तो इसलिए उनका भी रोल है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है भाजपा का, संगठन का जो स्ट्रक्चर है, सब लोग कोशिश करते हैं। ये भाजपा में क्या खासियत है विजय भाई? एक्चुअली बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन में रहने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनली वी आर वेरी स्ट्रांग, हमारा गढ़ है गुजरात जी। और मोदी जी जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे, तब से ऐसा कार्यकर्ता का कैडर है कि हमारे यहाँ सब कुछ ये पार्टी की डिसिप्लिन पर चलता है, इसलिए इजीली होता है ये सब। सर, आप लोग बहुत सारे हैं जो अभी भी हैं और पहले भी थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ इस पार्टी में सालों से साथ में काम करके आगे बढ़े भी हैं। गजेंद्र शेखावत जी जब वापस जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बस पहले चेक करूंगा। आनंद बोल रहा हूं। हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है। ये इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग ये कि गुजरात में जो सफलता मिली वो हिमाचल में क्यों नहीं मिलती दिख रही, और दूसरा, गुजरात की सफलता क्या आने वाले चुनावों के लिए आगाज है? क्या यही सफलता अब राजस्थान में भी हम उम्मीद करें? देखिए, निश्चित रूप से गुजरात की सब जो है वो चुनावों के परिणाम, राजस्थान बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है और गुजरात और राजस्थान का बहुत पुराना संबंध है। निश्चित रूप से राजस्थान में भी इसी तरह के परिणाम इस बार आने वाले हैं। और राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, राजस्थान की जनता पिछले 4 साल से इस कुशासन से जिस तरह से त्रस्त है, जनता मानस बना चुकी है। और जो है 100% ऐसा ही एक बार फिर इतिहास 2013 में जिस तरह से हमने 163 सीटें जनता ने आशीर्वाद देकर के जिताई थी, अब की बार मुझे लगता है वो भी टूटने वाला है। और मैं नहीं कहता, कांग्रेस के खुद ही विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि हम एक इनोवा या फॉर्च्यूनर में जाने लायक ही बचने वाले हैं। इसलिए समय अभी उस पर नहीं है टिप्पणी करने का। लेकिन गुजरात में जनता ने जिस तरह से डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को पर मोहर लगाई है, मोदी जी के नेतृत्व पर जिस तरह से एक बार फिर मोहर लगाई है, मोदी जी के एजेंडा पर जिस तरह से मोहर लगाई है, और जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से व्यक्तिगत कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी, कोई वादे कर रहा था और कोई दावे कर रहा था, कागज पे लिख करके मीडिया के सामने ऑन स्क्रीन दावे कर रहा था, वो सब धराशायी हो गए।
एक नया इतिहास, जिस तरह से हमने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था, हमारी लीडरशिप ने कहा था, एक नया इतिहास बनाने में हम कामयाब हुए। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मारिया बोल रही हूँ, मुझे आपसे सवाल ये भी है कि सब लोग लगे रहे, सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे थे, आप सबकी जिम्मेदारी थी, आप लोग सब गुजरात में काम कर रहे थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे थे। ये जो पूरा ऑल हैंड्स ऑन डेक अप्रोच जो होता है भाजपा का, कि सब चुनाव स्पष्टता से लड़ा जाए और जीतने के लिए लड़ा जाए, ये कितना अहम है? और शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अभी सीख नहीं पा रहे हैं कि भाजपा किस तरह से चुनाव लड़ रही है। तो देखिए मारिया जी, ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी क्षमता का नियोजन करके अगर चुनाव के मैदान में उतरती है, तो ये इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से उस लोकतंत्र के इस पारों को लेती है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रयास हम पूरी ताकत के साथ में करें, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व ने एक नई परिभाषा इस लोकतंत्र में दी है। माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ सिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को कार्यकर्ता भाव के साथ में, चाहे वो किसी भी पद पर, किसी भी दायित्व के साथ में काम कर रहा हो, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का मंत्री है, किसी प्रदेश का मंत्री है, प्रदेश का अध्यक्ष है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता भाव से चुनाव के इस समर में अपना योगदान करने के लिए जुटे। ये भारतीय जनता पार्टी ने नई परिभाषा देश के चुनाव के जो है वो क्षेत्र में दी है, और वो दिखता है, क्योंकि ग्राउंड पर कार्यकर्ता यही कहता है कि अगर मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे और आप जैसे यूनियन मिनिस्टर्स अगर काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। मेरा अंतिम प्रश्न आप दोनों से है, छोटा सा प्रश्न है, जवाब आप दीजिएगा। टॉस जीत गए तो मैच जीत गए, ये कहा जाता है, तो क्या गुजरात को लोकसभा के लिए टॉस माने? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों से कुछ इतर होते हैं, कुछ इतर होते हैं। 2018 के चुनाव में जब चुनाव से ठीक पहले 3 ही महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तब देश भर के मीडिया ने इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश अवश्य की थी कि ये लिटमस टेस्ट है, और लिटमस टेस्ट में जो जिस तरह का परिणाम आया, आने वाला 2019 का नैरेटिव अलग से होगा। लेकिन हुआ क्या, देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया। उसी राजस्थान में जहां हम सरकार से बाहर हुए थे, उसी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हम 25 के 25 सीटें 3 महीने बाद में जीते। ठीक ऐसी परिस्थिति, लगभग ऐसी परिस्थिति एक छिंदवाड़ा को छोड़कर के मध्य प्रदेश में भी हुई। इसलिए ये तय मानिए, यकीन मानिए, ये गुजरात के चुनाव का ऐतिहासिक परिणाम कुछ उस हद तक हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करेगा, देश में एक नया मैसेज तो देगा ही, लेकिन 2024 का चुनाव जो है वो अब की बार जिस तरह से 14 से 19 में ज्यादा मत देश की जनता ने दिया, देश ने ज्यादा आशीर्वाद दिया, 19 से 24 में और अधिक आशीर्वाद देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देने वाली है। गजेंद्र शेखावत जी धन्यवाद। विजय रूपाणी जी, आपका जवाब। टॉस गुजरात, मैच लोकसभा 2024। बस वही बात है कि गुजरात ने हमेशा देश को दिशा दर्शन किया है, करवाया है, और गुजरात का ये परिणाम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जनता मोदी जी के नेतृत्व में फिर से मोदी जी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध बनेगी, और जनता का मूड गुजरात ने बता दिया है। और यही जो ऐतिहासिक परिणाम आज गुजरात में आया है, वही 24 में भी वही परिणाम आएगा। हमें पूरा विश्वास है, हमारा भी कॉन्फिडेंस जनता पर है, जनता हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। इस जीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विजय रूपाणी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Live shots of Chief Minister Bhupendra Patel arriving at the Gujarat BJP headquarters. Huge passive media there. Siddhant and Arun Danta should also be there in that entire melee, but it's celebrations galore, and what a victory. Still at 154, 155. Absolutely. They're hovering on that number. Like I said, you know, 150 par, 150 par was the nara that was given. Yeah, and they have achieved that. Like I said, no party has done this in the history of Gujarat. No party has gone beyond that 150 mark. The BJP has, and the fact that they have done it after almost 3 decades in power, I think it's phenomenal in and of itself. This is
This is an election, like I said, comparable to 1985. You know, if they finish 5 years in Gujarat, there will be 32 years unbroken in power. And in modern Indian political history, there's only the example of the left, the CPM in Bengal, which was there in power for 34 years. Whereas here in Gujarat, 32 years to be in power uninterrupted, and that too with the record mandate in this latest term. I think it's unbelievable. And Zaka, in those elections or those states, the chief minister was the same. Yeah. So the people of the state voted for that phase. Here in the state of Gujarat, you have had multiple chief ministers change. The longest tenure was, of course, of Prime Minister Narendra Modi of 12 years. Thereafter, there has been 3 chief ministers. But the party, that is the BJP, which has been voted to power here, and it is the Modi voter. Let's be clear, it is the cult of Prime Minister Narendra Modi which is evident, for which the people of Gujarat have said, आइए हम आपको मजबूत करेंगे. सूरत हाल हिमाचल में थोड़ा बदलता दिख रहा है. किसी के माथे पर पसीना निकलता दिख रहा है. Because it's BJP is inching towards 30, the Congress slipping from 39 to 36, the others continuing to hold on. Siddhant is joining us live from the Gujarat BJP headquarters. Siddhant, Bhupendra Patel, CR Patel, there waving the victory sign. What's the plan now? What's going to happen? सुबिन आश्रम सुबिन क्या होने जा रहा है, जल्दी बताइए. आनंद पूछ रहे हैं. बताइए. ये गुजरात की जनता की जीत है. ये गुजरात की जनता ने बीजेपी को और मोदी जी के विकास के मॉडल को बहुत बड़ी जीत दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. सुबिन हमको यहाँ से निकाल रहे हैं. और आपको बता दें, CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल मेरे पीछे है. मेरे पीछे है CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल, और ये मीडिया से इंटरैक्ट करने जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद मीडिया. Zubin is asking me to go to the main hall because if I will go, then other media will also follow. So that is the strategy. But I'm not going to listen to him today. Actually, you can see the security. How are they planning to celebrate? Do you know how are they planning to celebrate? जुबिन से फिर से पूछिए, मीडिया इंचार्ज हैं, वो जवाब तो दें. जुबिन क्या क्या होने वाला है? एंकर पूछ रहे हैं. जुबिन क्या क्या होने वाला है? बीजेपी ऑफिस में क्या क्या होने वाला है? ये देखिए, फिर मुझे निकाल रहे हैं. ये फिर मुझे निकाल रहे हैं. चलिए आप जाकर के जरूरत नहीं है. भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल से मिल लीजिए. हमसे In fact, Rivaba Jadeja, who has just won, she has also spoken. Let's listen in. मीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो CM से लेके PM तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है. 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है. पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी. पूरे गुजरात में क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं. गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा. मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए. पूरा जिस फर्राटे से रविंद्र बैटिंग करते हैं, उसी फर्राटे से रिवाबा आंसर्स भी दे रही है. बट कंग्रेचुलेशंस टू द जडेजास. रिवाबा जडेजा, they are winning comfortably. It's a sea of saffron, ladies and gentlemen, on the wall here as far as Gujarat is concerned. What we are going to do as the celebrations mount in Gujarat, and then they will also translate into huge celebrations in the national capital. We'll also keep close tabs on what's happening in Himachal. Thank you for staying with us right through the morning, but we want you to stay with us right through the afternoon and into the evening, as that's the leaderboard as it looks as of now. Will this change? क्या इस पिक्चर में एक क्लाइमैक्स बाकी है, एक ट्विस्ट बाकी है? Stay with us here on CNN News 18.
On the day that counts, CNN News 18 was way ahead of competition. The first leads coming in right at the bottom of the screen for the BJP from Gujarat. The best election team delivered yet again. Story in Gujarat right now as the BJP crosses the halfway mark. First time the BJP is at its best ever in Gujarat. A party which has been in power for 27 years, uninterrupted, getting that number. The Congress has crossed the halfway mark and now has got the position of strength to form government in Himachal Pradesh. Elections equals CNN News 18. It's a day to celebrate for the BJP in Gujarat because they won a landslide victory. Almost there, of course, leads suggesting they're going to break the record of the biggest electoral win in Gujarat's history. Bigger than what the Congress record at 149 was, and of course bigger than what they won in 2002 under Narendra Modi. You know, if this was the Olympics, this is a little bit like Usain Bolt running the 100-meter sprint. And he's head and shoulders above everybody else. He's looking back and there's nobody inside. That's how bad the competition to the BJP is. Everybody is a distant second or third. Nobody inside to the BJP, and that's really the top story today as far as the Battle of the States is concerned. But there is possibly a photo finish in Himachal Pradesh where the Congress is resting a lot of its hopes on, and there are a lot of seats still there where the margin is about 500 votes. We'll get you to our results hub to get you a live update as well, exactly which way Himachal Pradesh is going to go. I'm Shivani Gupta. Thanks a lot for staying with CNN News 18, your election headquarters. Joining me are my colleagues Ridhima Bhatnagar and Anusha Soni. And over the next few hours, we will be calling the two big state elections. Of course, Gujarat seems like a done deal, but there is, of course, some while to go before Himachal Pradesh can be called. And as we get you those live numbers and a lot of the newsmakers and faces from both these states, the updates that are coming in from all the parties in contention, let me first go across to my colleague Ridhima, who has something on the magic wall for us. Absolutely, Shivani. What an exciting day it's turning out to be. As Shivani was rightly pointing out, Gujarat almost looks like a done deal, but really look what's happened here. It's a sea of saffron. Let me first just give you an overview of what had happened in 2017. 2017, when you had the Patidar agitation, GST demonetization, the areas of Saurashtra, South, North, these were the concern areas as far as the BJP was concerned. But now all of that has been taken back as far as the saffron surge is concerned. So the leads now suggesting onwards, upwards of 150, 99 was the number that we saw last time. And this was the largest question, that how far can the BJP take it? Just look at this. Congress at 19, the Aam Aadmi Party, which was the new entrant, at about 5 leads, and others at 4. So under 30 is all of this combined, and onwards of 150. Quickly, before I bring in Anusha also, just look at the pockets where the Aam Aadmi Party is actually making the dent. It's actually at the cost of the Congress Party. Just let me show you some of these pockets. Jamjodhpur is one of them. The other pocket, of course, is this tribal area that the Aam Aadmi Party now seems to be clawing from the Congress Party. So, the two big questions here. One, what does this mean for the Congress Party? Under 20, if these numbers hold. More importantly, what does this mean for the Aam Aadmi Party going forward as well? Well, that's Ridhima telling us about what exactly does the magic wall tell us. Now, here we are going to put out for you what the numbers really look like, and the robo will come out and put out those graphics to give us a sense of what the numbers are really stacked up in Gujarat and Himachal Pradesh, the two key states that we are keenly watching on. All right, those are the numbers coming in. The robo is here and he's going to tell us a little bit more about how this is going to look like, the Gujarat and Himachal. All right, it's going up and it's going to show us the numbers, how they are stacked up. Let's have a key look at Gujarat, one state that the BJP has swept, breaking the records in the history that the state has seen, breaking the Congress record, and more importantly, how that we have seen. Behind me are the numbers of Gujarat, as you see how the assembly is stacked up. 154 for the BJP, Congress on 19, Aam Aadmi Party at 4 and the others at 4.
clearly the BJP making all those gains as far as their numbers are concerned, and the gains are coming in from those seats, and the gains are from the Congress party and from the others. The consolidation of the Patidar vote, of course, clearly has worked. The losses that were made earlier in the Saurashtra region have been regained by the BJP. So that's clearly the lead, which is showing as far as Gujarat is concerned. It was a lone race for the BJP, breaking the record, not just their own record, but the record that we have seen in the history of Gujarat. Let's go to Himachal Pradesh, and this is one of the key states where there's some good news for the Congress party. 38-27, of course, these are the leads. They will consolidate in the hours to go as we move forward. Others on 9, Aam Aadmi Party at 0. They were not able to open their bank account, but the Congress party has something to cling on as far as the state of Himachal Pradesh is concerned. That's the number for you. Congress on 38, BJP on 21. Congress has made huge gains as far as the region of Shimla is concerned, largely on the big areas of Himachal Pradesh. Let's come down. Let's get down slowly and get back to my colleagues who will tell us more about what exactly is happening in the states, the voices which are coming in. Himachal, of course, has been good news so far for the Congress party, but Gujarat is the big story. And within Gujarat, of course, the story of Saurashtra is the story to watch out for. How BJP made sure, Shivani, that the gains that were made by the Congress party and the political opponents, they were able to get. Yeah, actually, I feel we've been talking a little bit about how there's pro-incumbency in Gujarat, but I think there is anti-incumbency. But the anti-incumbency is not against BJP. The anti-incumbency was against Congress. Imagine you have 77 of your MLAs in one of your best performances in Gujarat fighting the BJP in the last elections. And what are you down to? 19. Yeah. That means your MLAs were not voted back. And that's actually the problem for the Congress party, to come from a position of that to this. Anti-incumbency is there, but it's against the opposition, the Congress, and some gains for the Aam Aadmi Party there because of that. We'll delve into that. I want to go across to my colleague Siddhant Mishra, who's also live from Gujarat, from Gandhinagar, in fact, the BJP headquarters. And there are stories between stories in Gujarat results as well, Siddhant, but you could forgive the BJP for not caring about anything else right now, because, they've managed to do everything they wanted to do. They wanted to touch 150. They seem to be doing that. They wanted to increase their vote share. They've done that. They wanted to win the tribals over. They seem to have done that. And everybody else was already voting for them. जी बिल्कुल, and in fact, while post elections, I was speaking to some of the senior leaders of BJP, and they were telling me we are going to cross 140 mark. तो हमको यही लगता था कि ऐसे ही बोल रहे हैं, just to create atmosphere of victory. They are saying this, but they were confident. They were saying this because they were confident about the work they have done. Actually, वो अपने leaders को सिद्धांत बोल रहे थे, आप 180, 170 मत बोलो, हमारे लोग complacent हो जाएंगे, ऐसे मत बोलो, इलेक्शन अभी लड़ना है. वो बोल रहे थे कम बोलो. हाँ, और एक्चुअली एक और चीज थी, व्हेन आई ऑपोजिशन पार्टीज वर क्वेश्चनिंग बीजेपी कि आपका बेस्टियन है, आपको क्या जरूरत है पीएम को उतारने की, अमित शाह को यहाँ कैंप करने की क्या जरूरत है. व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू बीजेपी गाइज, दे टोल्ड मी कि द रोड शोज वर ऑर्गेनाइज्ड શરૂ થાય છે જે જવાબદારી આવતા 5 વર્ષ સુધી અમારા વિસ્તારની અંદર અમે નિભાવીશું. He's won his election from Viramgam, which is his home base. Last time around, I remember going to the polling booth where he voted from, but he couldn't contest the last election. He was 24 years old. This time, he was, of course, he's fighting on the BJP ticket from his home base, has won. Let's play that out, what he has said. સાહેબના કામોની છે. આ જીત કાશ્મીરમાંથી 370 હટાવનાર દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહની છે. આ જીત રાજ્યના મૃદુદ મુખ્યમંત્રી માને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની છે. આ જીત સીઆર પાટીલ સાહેબના આક્રમક કામોની છે, અને સ્વાભાવિક છે કે આ જીત આવતા 25 વર્ષનું ગુજરાત કેવું હશે એ નક્કી કરશે. અને સમગ્ર ગુજરાતના જેટલા પણ ઉમેદવારો જીત્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના, સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજથી અમારી જવાબદારીઓ શરૂ થાય છે, જે જવાબદારી આવતા 5 વર્ષ સુધી અમારા વિસ્તારની અંદર અમે નિભાવીશું. Big win for the BJP there, and one of the winners for them is their new entrant, Hardik Patel.
partidar agitation phase against the BJP, although he has family lineage with the BJP, then with the Congress party, state in charge, disenchanted, came to the BJP, has fought on the ticket from Viramgam and has won from there. Let me go back across to my colleague Siddhant. Siddhant, yes, take it over. Well, yes. So I was saying that when I asked this question to BJP guys, that why opposition is asking that why are you bringing Prime Minister to campaign? Why Amit Shah ji is campaigning here? What is the need if it is a BJP bastion? So the reply that I got from them is that it is nothing. It is just to to make sure that BJP voters come out to vote, and that has exactly worked. That has exactly worked in these elections, and this is the reason that the 150 mark has been crossed. Now behind me you can see this is the first floor of BJP office. I would ask my video journalist Bimba sir to pan and give shot. There you see that is the room where Bhupen Patel and CR Patil is currently sitting, and they are having a meeting with the other senior party leaders, and you can see all the Karyakartas have gathered here on this first floor where we are reporting from. We are perhaps the only channel reporting from this floor because no other media personnel is allowed to report from here, and behind me you can see the BJP Karyakartas meeting each other, celebrating, and that is the office where that is CR Patil's office on the first floor where usually CR Patil takes meeting, and inside that office CR Patil and Chief Minister Bhupen Patel are right now relaxing and speaking to the Karyakartas and speaking to Karyakartas in other districts as well. We have also been told that in some time from now they are going to address a press conference. Combined press conference is going to be addressed also. Okay, look, there is some movement. I guess CR Patil and Chief Minister both are all set to get down for a press conference. So they, the other Karyakartas are rushing down. There is some movement that I can see right now. I'm not okay, sure. Siddhant, stay with us. We're going to cut back to you as soon as you have a BJP leader with you or the press conference begins. Let me quickly go across to Griha, my colleague, who's joining us from our results hub. Griha, the story in the Gujarat continues to be very, very clear. But I want to ask you a particular question. Could you show us exactly what is it, where is it that the Aam Aadmi Party is gaining? Because there's a lot of talk about how the traditional vote base of the Congress Party is, in whatever percentages we will know eventually, is shifting to the Aam Aadmi Party. They've not really managed to do what they were claiming they will do in Gujarat. And everything that they've managed to do, for example, right now at about 5 seats leads, is at the cost of the Congress Party. Just give us a sense of what you're picking up on the Aam Aadmi Party. Absolutely, and Shivani, the fact that you've asked this question is perfect timing because just about 3 minutes back, we've got that one winner announcement when it comes to the Aam Aadmi Party. So there's one thing in Aam Aadmi Party's kitty that has happened. This one has come from, sir, ek baar winning list dikhaiye aap mujhe. This one has come from where's this? Jamjodhpur. Ahir Hemant Bhai has won it from the Jamnagar district. One for the Aam Aadmi Party. That's the tally looking like when we're looking at the winner list in Gujarat. We already showed Hardik Patel winning his electoral battle, the first one, the maiden one for him. However, Valsad, we have seen BJP winning. There is the from Kaprada, you have BJP winning. We've just got an update from Mehsana district. Another win for the BJP. Rushikesh Ganesh Bhai Patel has won from there. Now, we were talking about how Himachal Pradesh could just turn out to be a photo finish, Shivani. So let's take a look at that tally also. We are looking at the main tally of Himachal Pradesh. If we look at right now, the declaration has happened on 28 seats. BJP 13, Congress is 13. That is the victory figure that is currently standing at. So 13-13. However, Congress does have a bigger lead with 38. So that's something. We're going to talk about Himachal in full detail in just a bit because I do really want to know from you. Before I stepped into the studio, I was checking the margins in Himachal Pradesh, and there are about 8 to 10 seats where the margins are hovering about 500. So I'm going to come back to you. Let me also go across to Delhi BJP MP Manoj Tiwari, who's joining us live now. Manoj Tiwari ji, Delhi के रिजल्ट तो कल आपने जो भी है डाइजेस्ट किए होंगे, लेकिन गुजरात में जो जीत मिली है भाजपा को, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गुजरात की जीत तो बहुत ऐतिहासिक है और गुजरात के लोगों को अब लोग बार बार नमन करते हैं। शब्द भी छोटे हैं, भाव भी छोटे पड़ रहे हैं।
ऐसी विजय तो बहुत कम ऐसी राजनीतिक पार्टियों को मिला है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक एक चीज़ जैसे सजा के रखा है गुजरात का, और जिस प्रकार से गुजरात का पुनर्निर्माण किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो गुजराती प्राइड हो। कहते हैं ना कि अभी हमारी कहीं बात हो रही थी तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी हैज इंक्रीज्ड गुजराती प्राइड, हेंस गुजराती प्राइड कभी भी नरेंद्र मोदी जी को झुकने नहीं देगा। ऐसी बातें जब गुजरात में हो रही थी कि गुजराती प्राइड कभी भी नरेंद्र मोदी जी को लेट डाउन नहीं होने देगा, तो तभी हम लोगों को पता चलता था कि जहां प्राइड भी बढ़ा हो, विकास भी हुआ हो, सुरक्षा भी बढ़ी हो, तो ये एक बड़ा कमाल का मॉडल है गुजरात का, जो नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से सम्मान किया है। और जो लोग नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अपमानित करने वाले शब्द बोले थे, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की औकात नापने की बात की थी, उनको भी गुजरात ने जवाब दे दिया। जी मनोज जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब हमने गुजरात के बारे में बात करना शुरू करी तो लोगों ने कहा 25 साल 27 साल एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर होगी, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहां भाजपा अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाएगी। पर जब हमारे कॉलीग्स रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए तो लोग काफ़ी खुश थे, उन्होंने कहा कोई मुद्दे ही नहीं है। तो ऐसा बीजेपी क्या सही कर रही है जो दूसरों के लिए भी एक लेसन बन सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बेसिकली जहां जहां भारतीय जनता पार्टी तब शासन की है जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर उस स्टेट में बीजेपी ने इतना दिलों को छुआ है लोगों को कि अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। आपने सेम उत्तराखंड में देखा होगा, आपने सेम उत्तर प्रदेश में देखा, आपने सेम असम में देखा, और हम लोगों ने जो हिमाचल का भी जो रिजल्ट आया है वो अभी जरूर हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां भी नेक टू नेक फाइट होना, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल जनता ने दिल से नहीं हटाया। हम चौथी बार एमसीडी में भी, जैसे आपने कहा, हमने डाइजेस्ट कर लिया होगा। देखिए, हम चौथी बार एमसीडी में आने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हमें 104 सीट मिला। और जो आम आदमी पार्टी 9 साल से डींगे हाँक रही है, उसको 220 कहने के बाद अपना 134 से संतोष करना पड़ा। मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। निश्चित रूप से एक मॉड्यूल है जो हर लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हिमाचल में पड़ेगा, अभी भी नेक टू नेक फाइट सेवा है। समझ के काम करती है। जी, नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस को 38-27 लीड्स हैं, कुछ सीट्स पर विक्ट्री आ गई है, लेकिन हिमाचल की वो रिवायत जारी है कि हर साल पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है। हिमाचल में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? उसकी समीक्षा पार्टी करेगी जी, जो भी अभी रिजल्ट फाइनली आ जाए, लेकिन हम समीक्षा करते ही हैं। हम जनता के जनादेश को सर माथे पे रख करके भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है, और हम समीक्षा करेंगे क्योंकि हमने अपनी सेवा में तो कोई कमी नहीं रखी है। और भी कुछ कारण होंगे, वी विल टॉक ओवर दैट, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है गुजरात में, वो एक बड़ा नजीर है, और उस पे हम लोगों को और भी अच्छा करने की ताकत मिलेगी। ये गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी पर भी। आपने बोला आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी बोल रही थी 200 वोट जीतेगी, 220 वोट जीतेगी। गुजरात में भी उन्होंने कहा था कि 70-80 सीट जीतेंगे, 90 सीट जीतेंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। लेकिन आज जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ अलग आ रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है, और इस वोट परसेंटेज और ये अगर 5 सीट भी जीतते हैं तो बोलेगी कि ये नेशनल मैसेज है और बीजेपी का अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी ही है। नहीं, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से विज्ञापन के बल पे अभी तक आई है आम आदमी पार्टी, उसको ये भी सोचना चाहिए कि हिमाचल में क्या हो गया। उसको 1% भी उसको वोट शेयर नहीं मिला है। हाँ, और इसलिए हो रहा है कि पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल, वहां झूठ नहीं चल सका। 6-7 महीने के पंजाब के शासन के बाद आपकी यही स्थिति,
तो पंजाब ही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक पतन का बड़ा कारण बन जाएगा। और मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से 11% उनका वोट शेयर दिल्ली में भी गिरा है, तो वो दिन दूर नहीं जब 2025 तक अब वो दोष भी नहीं दे पाएंगे किसी को। एमसीडी भी देख लें, सरकार तो उनकी देख ही ली गई है। 2025 उनका आम आदमी पार्टी का समापन वर्ष हो सकता है। चलिए मनोज जी, वैसे तो कहते हैं कि ऐसे एपिटैफ नहीं लिखने चाहिए, ओबिचुरी नहीं लिखनी चाहिए पॉलिटिक्स में, बट आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। Thank you so much for joining, and of course congratulations for the BJP victory in Gujarat. We'll see how Himachal goes. My colleague Anshul is also joining us from the BJP national headquarters in the national capital. Anshul, what are the scenes like there? What is the plan for this evening? So yes, definitely history is being rewritten in Gujarat, where the BJP is on the verge of creating history. They are going to get the highest number of seats that has been gathered by any single party. But yes, there is a lot of tension in Himachal. It is going for a photo finish at this point in time. But yes, I'll try and show you the visuals over here that although the celebrations have started a bit late, but yes, finally they have started. The workers of the BJP have started gathering over here at the BJP headquarters. If you could see over here, a handful of workers have already gathered over here. Sir, गुजरात के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। हिमाचल के लिए टेंशन है थोड़ी? देखिए, ये ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर है। मोदी मैजिक है। जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद और प्यार जो गुजरात के और पूरे देश की जनता का मिल रहा है, और हिमाचल के अंदर भी जब अंतिम परिणाम आएंगे तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहां पर भी कमल खिलने वाला है। गुजरात की जीत का सबसे बड़ा नायक कौन है? देखिए, सबसे बड़े नायक हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं। माननीय प्रधानमंत्री देश के आज प्रधानमंत्री हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं, और विश्व के अंदर आज सबसे बड़े नेता के रूप में, सबसे प्रसिद्ध नेता के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और पूरा विश्व जिनका लोहा मान रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत का लोहा मान रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक मोदी मैजिक सुनामी कह लीजिए, पूरा सुनामी ऐतिहासिक जीत दर्ज करा रही है। So yes, the landslide, a word that is very familiar with Himachal, that is something that has happened in Gujarat, and the preparation for the celebrations have already started out here at the BJP headquarters. If you could see behind me, the speakers are being brought out. What we have been told over here on the ground is that at approximately 6 p.m. somewhere around that time is the time when the Prime Minister is likely to arrive over here at the BJP headquarters, and he will be speaking to the crowd, addressing the workforce that will gather over here to celebrate this massive victory that they have managed to gather in Gujarat. However, Himachal is still a bone of contention for the BJP, between the BJP and the Aam Aadmi Party, so it remains to be seen as to who is going to win that very crucial battle in Himachal and how does the election go from there. But yes, the Gujarat victory is something that has definitely motivated the entire cadre of the BJP, and as you can see in the visuals behind me that the people have already gathered over here. The party is about to begin in the next few minutes. Sure. Anshul, we'll of course continue to come back to you. Of course, the BJP already in celebratory mode. Let me also bring in our other guests at this point. We have the Vice President of the DPCC, Mudit Agarwal, and from the Aam Aadmi Party, we also have Nimi Rastogi. Good to have both of you on the broadcast with us. Nimi, I'd like to begin with you. Let's talk about Gujarat. How are you seeing the Aam Aadmi Party's performance? Of course, the Aam Aadmi Party was in a celebratory mode yesterday from the MCD election, seeing that as a fillip as far as your national ambitions are concerned. But are you content with the kind of inroads that you've made today? See, first of all, congratulations for the historical win to BJP. And coming to Gujarat from AP side, I would say since we were contesting our first election seriously, so for us everything is win-win. You know, we've secured more than 20 lakh votes and some seats are also there. So for us, our graph is going up and up. Anyways, of course, it's a matter of introspection as to what to do the next time and how to present our work and our model of Delhi to the people of Gujarat. का presence नहीं दिख रहा है. जैसे सूरत में आप लोग बहुत optimistic थे because of the kind of local elections में जिस तरह से आपने 27 seats लाई थी. But सूरत को अगर आप देखें तो that's been completely taken over by the BJP. So do you think कि आपका खुद का calculation भी कहीं कम हुआ है? जी हाँ, हमारे ये जो नतीजे हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है. बट आई वुड लाइक टू से कि अगर जैसा कि मैं सुन रही हूँ आपके चैनल पे कि ये मोदी जी की महिमा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महिमा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी
कि उनको निमी जी, sorry, I'm interrupting you. C.R. Patil is speaking right now, cutting क्यों across. उतरना पड़ा? क्या ऐसी बात हो गई? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से चाहती है। भाजपा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करके दिखाया है। इस विजय के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे गुजरात में 33 जनसभाएं की, रोड शो किए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर एक वातावरण तैयार किया। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गुजरात चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया और जनसभाएं संबोधित कर एक वातावरण तैयार किया। पूरे प्रचार अभियान के दौरान हमें पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसमें हमारे सहप्रभारी श्री गुप्ता साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें अपार शक्ति और प्रेरणा मिलती रही। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनाव में भव्य विजय के लिए मैं भाजपा के केंद्रीय नेतागण, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के हमें चुनाव में सहायता करने आए हमारे महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता, गुजरात भाजपा के 80 लाख कठोर परिश्रमी पेज कमेटी के कार्यकर्ता और सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं का विजयी संकल्प को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे। ये हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने अप्रतिम परिश्रम से जनता की सेवा करते हुए ये विजय प्राप्त किया है। मैं जब पूरे प्रचार अभियान पर नजर डालता हूं तो मेरे मन में 3 शब्द आते हैं: संकल्प, कठोर परिश्रम और संतोषजनक परिणाम। चुनाव अभियान में मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनके अथक परिश्रम को देखकर हुई। चुनाव प्रचार अभियान कार्यकर्ताओं के लिए जीवन का एक यादगार अनुभव होता है। यह संगठन के दृष्टिकरण और विस्तार का अवसर होता है। जनता और संगठन के रिश्तों में विश्वास और मजबूती लाने का भी अवसर होता है। कार्यकर्ता घर घर गए, उन्होंने पार्टी के संदेश और आदरणीय प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाया। हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा प्रचार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के कठिन परिश्रमों की कहानी है, जिसने एक बेहतर गुजरात के सर्जन के लिए निस्वार्थ योगदान दिया है। भाजपा की यह भव्य विजय 27 वर्ष के भाजपा के सकारात्मक कार्य का विजय है। हमने जनता की सेवा और कल्याण को आदर्श मानकर कार्य किया। हमने अपने प्रचार अभियान के दौरान सुशासन और विकास के हमारे जो वादे थे वो साकार किए। संकल्प को गुजरात के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया।
staying with us. We're cutting across directly to Darshna Jardosh, MOS Railways, joining us, MP from Surat. Darshna जी, बहुत-बहुत आपको मुबारक हो जो रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी के लिए गुजरात में। और सूरत की मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कैंपेन किया था और वो उन्होंने म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में जो उनको थोड़ी सक्सेस मिली थी, वो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शन में भी आएंगे। लेकिन अभी तो पूरा सूरत बिल्कुल बीजेपी के साथ ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत कैसे हो रही है? सभी एमएलए मेरे जाइंट किलर हैं क्योंकि आप पार्टी के बड़े लीडर्स जहां पे उन्होंने राजनीति करी वो सब लोग यहां भारी मतों से हारे हुए हैं। तो ये मैसेज पूरे गुजरात में भी जाएगा और हम लोग पहले से आश्वस्त थे, भरोसा था हम लोगों को कि जब मेरा चुनाव हुआ था तभी 76% वोट हम लोगों को मिले थे। इसके आगे वाले समय में भी ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा है। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा सूरत में हुआ है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ में स्मार्ट सिटी के कॉन्क्लेव इतने भी हुए, स्वच्छ सिटी हुआ, तो ये लोगों को पसंद आता है। सरकार की जितनी योजना बनी और डबल इंजन की सरकार में ऐसा हुआ। भूपेंद्र पटेल बोल रहे हैं अभी, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, उनका सुन लेते हैं एक बार। कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थित किया। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारी छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है।
साथियों, ये जितना जश्न मनाने का मौका है, उतना ही ये परिपक्वता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास व प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है, तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाएं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह गुजरात की अगले 5 वर्षों की लंबी सुनियोजित और वैश्विक यात्रा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में बना हुआ दस्तावेज है। पिछले 2 दशक से हमने आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जन सेवा को साधना बनाकर गुजरात के कोने कोने में विकास किया। हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शेड्यूलेशन 100% लाभार्थी